Good morning, students. Let's start with final session of the amalgamation. Before starting final session of the accounting amalgamation, we'll first quickly revise our basic rules of accounts. Today, I'm not going to take it basic rules of accounts, traditional approach, modern approach. Today, I'm going to ask you after so many days, randomly entries. Those students who are interested, please raise your hand. Yes. Chalo. So, Vaidahi, yes, beta. Quickly revise. Chalo, warm up. Sir, good morning, sir. Okay. Good morning. Chalo. First Uh, entry for you, credit sales. Credit sales. Here data's come. So data's account debit to sales. So Discount allowed. discount allowed is an expense for us. So discount allowed account debit to It's a loss, huh? we Loss. It's a loss, not expense. okay, sir. So discount allowed is a loss. So we give that to data. So discount allowed debit to data's account. Expense payable. Expense payable is an liability. So it is to be credited. So expenses account debit to expense payable account. Discount received. Discount received is an gain for us. So creditors account debit to discount received. Prepaid expenses. Prepaid expense is an asset for us. So income account debit to prepaid expenses account. Asset shows which balance. Sorry. Prepaid expense account debit to income account. Sorry. Why income? If expense is there, why you have to credit income? Prepaid expense account debit to bank or expense account. Hey, Prepaid expense to expense. expense. Income receivable. Income receivable is an asset. So income receivable account debit to income account. Income received in advance. Income received in advance is an liability for us. So bank or income account debit to income received in advance. Income account debit to income received in advance. Yes, sir. Prepaid expenses. Prepaid expense is an asset. So prepaid expense account debit to expense account. Bad debts. Bad debts is a loss for us. So bad debts account debit to data's account. Loan taken. Loan taken is a liability. So bank account debit to loan taken. Interest on loan. Interest on loan is an expense. So interest on loan account debit to bank account. Very good. Cash collected from debtors. So data gives us money. So cash account debit to data's account. Cash paid to creditors. So cash is going out. So creditors account debit to cash account. Shares forfeited. Shares forfeited. So it is an refund of the money. So share capital account debit to share forfeiture account to call scenarios. Great. Buyback may. How many entries are there? 5 entries. Start. So first, equity. First, we should sell any investment if we have. So investment bank account debit to investment account, and if there is any profit to profit, and if there is any loss account debit. So next, buyback of equity share capital account debit to equity. If we bought back on premium, okay, equity share capital account debit, premium on buyback account debit to equity share on buyback account. Next, we pay the buyback. So equity share buyback account debit to bank account. Next, we cancel the premium. So securities premium account debit to equity share. Securities premium account debit to premium on buyback. Next, we transfer to capital redemption reserve from general reserve to capital redemption reserve. Arey wah. And CRR is used for? Redemption purpose. CRR. CRR is useful for? Maintain the capital structure of the firm. Utilize for bonus shares. yes, sir. CRR का एक ही use है. What is that use? To bonus purpose. Only bonus shares. Security Yes, premium sir. you use for premium, no? Yes, sir.
So CRR Yes, has sir. only one use, that is bonus share only. Yes, sir. याद हो जाएगा? Yes, sir. Yes. Very good, Vaidhi. Thank you, sir. Vaidhi, now same thing you do for accounting standards also. Have you maintained your 100 pages book? I have maintained a book, sir, but not 100 pages. You maintained it, but your Yes, sir. concept book is different as compared to your problem Yes, illustration book, correct? yes, sir. So you have to read from concept book. How many accounting standards now you already read? Means now you have Um, confidence. from the module one and half till module two. Some Okay. 13 economic standards. Are you finding it interesting or Yes, difficult? sir. It is interesting, sir. Interesting. So can you explain me something about S11? No, sir, I didn't know about A7. Okay. So now I will give you some targets. Yes, sir. What happened now? Already you are studying that amalgamation, so I don't want to give you any burden. We will do that. We'll do that in the month of end of the February. So Okay, I will take some revisions. If okay, institute permits, it's okay. If not permits, we'll take it on my channel. Okay. okay, sir. So we'll continue with the revision sessions like this only for accounting standard. Is it okay? Because Yes, amalgamation, I sir. don't think now you will need some revisions, not for buyback also. Internal reconstruction and branch that will do properly. So remaining part we will do it in the revisions because now I think it's you started your journey from September. So it's very difficult to recall concepts which I taught in the September. So we'll take it as a revision. Okay, every one Okay, of sir. you and attend that session. It is useful only for it is only for your benefit, not for my benefit. And I want everyone to score 60 plus in accounts. ठीक है बहुत बढ़िया बेटा वैदई बहुत बढ़िया you Mhm. answered it very well. You recalled buyback also properly. Only one thing you made a mistake where you it is prepaid expenses, and second mistakes you have done it in the bonus shares. You forgot that Yes, CRR sir. is utilized only for the purpose of bonus shares. Very good, Yes, nicely answered. Yes, ठीक है. So this was the quick revision from Vaidai. So let's start with our amalgamation chapter now. Uh, हार्दिक, होमवर्क क्या था बेटा? Sir, question number 5, 6, 7, 8. And And TY के sir, completed? TY, TY के questions. Yes, sir. We have completed TY के. Yes, sir. All questions हो गए हमारे. नहीं सर, दो तो ऑलरेडी पास्ट एग्जामिनेशन में कर लिए थे, वही सेम थे तो, और बाकी तो सर सारे हो ही गए थे कल क्लास में. एक भी लेना नहीं है क्या? सर शायद एक आध होगा, शायद एक था सर, एक था. सर बता देता हूँ, एक था सर. क्वेश्चन नंबर 10 था, एक जो नहीं लिया था, बाकी तो सारे ले लिए थे सर. TY के 14 is I think left, no? सर ये वही सेम वाला क्वेश्चन है, वो गुडविल जैसा. अच्छा. Okay. So we left only with TY के 10. यस सर. ठीक है भाई. And from tomorrow we are starting with the new chapter. So don't miss it. It's very simple chapter. Very good नितिन. चलो एक क्वेश्चन आप ही बता दो बेटा हार्दिक. Sir, the following balance sheet is given इज for ओके. X and Y. Sir, हाँ. adjustment है. A new company X and Y is formed to acquire the sundry assets trade payables of X and Y Limited.
And for this purpose, the sundry assets of X Limited are revalued at 1 lakh. The debt due from X Limited is also discharged in the accounts of XY Limited. Okay, the debt due to X Limited. Yes, sir. सर वो क्या कहते हैं उसको इंटरकंपनी होइंग्स है सर. Intercompany owings, but amount will be paid by the XY Limited for that, and then they will cancel the liability in their company. Okay. Yes, sir. So this is just you have to understand. First you will take it over and then you will pay it. Okay. Yes, sir. So how much you are going to pay to X Limited? सर नेट एसेट मेथड है सर, तो नेट एसेट्स के थ्रू. Reserves we are not going to pay. नो सर. सर और सर प्लांट एंड मशीनरी का रिवैल्यूएशन. For which company? X Limited, no? ये सर 1 लाख. 1 lakh. So 1 lakh plus 15,000 minus 25,000. ये सर. सर 90,000 So 90,000 is a नेट एसेट्स. PC that you are going to pay. Correct? यस. यस सर. And what is your loss? सर For 1 lakh 10,000, they are getting 90,000 means realization mein 20,000. loss is of 20,000. 20,000. Okay, so we have done with this question now. Uh, which accounts you are going to open? सर first of all realization, sir, in XY X. Limited we will. Only X Limited is asking the exam, no? What is asked? Sir, only X Limited. So, sir, for X Limited, we will open first of all realization account, then, sir, XY Limited account, and So then, sir, equity shareholders account. their sundry assets are valued at 1 lakh. Hai. Yes, sir. Not overall plant and asset is valued at. So, beta, our PC is wrong. First thing, our PC is 75,000 because your sundry asset means total assets you are revaluing at 1 lakh rupees. Okay, sir. Okay, Okay. sir. Yes, sir. So 75,000 is a PC. So first thing, sundry assets is IMP over here. Including non-current investment. IMP point. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So now, Sir, realization account, XY ah, Limited account, equity shareholders account, equity shares in XY. and even loan to Y Limited you can open. Okay, sir. What you can open? Loan to Y Limited. Okay. So for loan also you are getting how much? 15,000 rupees. Yes, sir. Actually, for sundry assets, they are paying 75,000 and for loan, they are paying separately 15,000. You're getting my point? सर मेरा ये गलती हुआ था सर, क्योंकि मैंने पीपीई को ही सिर्फ माना. Yes, 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 yes. Sorry. मैंने तो सर पीपीई को ही माना था सन्ड्री एसेट्स को. Okay, okay. Yes, you are correct. Only for PPE, and this entry is a separate entry, beta. ओके सर. So loan, you won't transfer it to realization.
Yes, sir. Don't transfer loan account to realization. So this is the new part in this problem. What is the new part in this problem? Don't transfer loan to Realize. realization. Okay. Only PP, yeah? Including non-current investment, you please cut down it. And therefore, I always tell you to use pencil whenever you are writing on question. So it's simple to erase it. Don't transfer loan to realization account. Are you getting this point, beta? Yes, sir. Yes. So which accounts you are going to open? Sir, realization XY limited Realization account, account. Yes. Next. XY limited account, Loan first. First it's a loan loan account, to Y Limited. This is first time. So this is first time you are opening it. then sir XY limited account, XY Limited. then sir equity shareholders account, Equity shareholder. then sir equity shares in new company. Equity shares in XY Limited. Yes, sir. It has a debit balance of rupees. Sir 15,000. Bus. This is a new account. First time you are opening this. Yes. Realization account. Sir two sundry assets, sir. It will be sir 1,20,000, Hmm. and sir buy liabilities 25,000. Hmm. Sir buy XY limited 75,000, and sir two realization sir 75. Very good. Sir, फिर sir XY Limited में sir uh, buy equity shares in XY Limited. By equity share capital and reserves and surplus, who is going to transfer? Why are you not going by sequence? Yes, sir. Oh, sorry, sir. Uh, Sir, back and 1,10,000. Now PC discharge. Yes, sir. PC discharge, sir. Buy equity shares in XY Limited, 75,000. Sir, then sir two XY Limited, 75,000. Buy equity shares. पहले सर लोन को बाय इक्विटी शेयर्स इन XY This is Limited, first time. 15,000. Yes, sir. Two loan account 15,000, and sir by equity shareholders 20,000. Realization loss. Yes. Two realization loss 20,000. And sir then two realization loss हो गया. Two equity shares in XY Limited 90,000 tallied. So what is new in this question? The loan account. Loan account you are opening for the first time. Yes, sir. And you are giving them Equity shares. equity shares in XY Limited. So everyone understood, beta? This was a very easy question now. Only the point is that loan to Y Limited you have to open. Have you done your past examination questions also? Sir, not all, sir. Only till eighth question. How many questions you completed? Sir, sir, 1, 2, 3, 13, 14, 15, 5, 6, 7. We completed in the class. Yes, sir. Last one to be completed. Then, sir, today I have completed, sir, 5, 6, 7, 8. In last session we completed till Sir, last session we completed, sir, first question we completed. sir, 1, 2, 3, 13, 14, 15, and sir, 4, 3 हो and, गया था, 4 हो गया था. and sir, 6. What about 5? 5 नहीं हुआ, sir. 6 over. Yes, sir, 6.
कौन सा डिफिकल्ट है जरा बताइए। सर 5 में एक एक सर क्वेश्चन मुझे एडजस्ट। लेना है रे। वन क्वेश्चन ऑफ टीवाई के इज डिफिकल्ट वन, जो मुझे मिला नहीं एक्चुअली, और वी कंप्लीटेड ऑल। कंप्लीट। एक डिफिकल्ट क्वेश्चन वाज देयर। सब हो गए लगता है। सर 13th वाला तो नहीं? विच वन इज रिमेनिंग अनिल जी? टीवाई के 14। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 60,000, सोल्ड फॉर 80,000, so 50,000. How much is the loading? 15 to 20 divided by 80. सर 3.75। Hmm? सर 37,500। 13? 37। नहीं, मतलब लोडिंग कितना हुआ? 12,500, I think so. यस सर। So loading was 12,500. Tambeshwari, 12,500 is loading. TYK 13 is the same question. TYK 13. ठीक है, so we won't solve that. We will take some past questions. पास्ट क्वेश्चन ही लेना है ना बेटा? यस सर। चलो ठीक है। 2016 का क्वेश्चन है। हाउ मेनी मार्क्स? 16 मार्क्स। रीड एडजस्टमेंट्स, चलो। सर AB Limited is to purchase the whole of the assets of A Limited except cash and bank balances for 28,25,000 to be settled as 5,75,000 in cash as to balance by issue of 1,80,000 equity shares credited as fully paid to be treated at value of 12.5। ओके, सो परचेस कंसिडरेशन डायरेक्टली गिवन। यस सर। सर एक फर्स्ट पॉइंट भूल गया सर, मैं गलती से स्किप हो गया। दैट इज ओनली फॉर प्रेजेंटेशन, इट्स ओके। ओके सर। सर सेकंड पॉइंट इज आल्सो सेम। यस सर। सर इट इज फॉर बी लिमिट। यस, देन फोर्थ पॉइंट ठीक है। द लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड इज टू पे प्रेफरेंस होल्डर्स 12 इन कैश For every share held in full satisfaction of the claim. द लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड एंड ए बी Yes, sir. लिमिटेड इज टू मेक द पब्लिक इशू। Sir, preferential takeover नहीं हुआ सर इसमें। ओके, एंड अंडरराइटिंग कमीशन यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। डायरेक्टली बैलेंस शीट पूछा है। Yes, sir. ओके, so what is the purchase consideration you are calculating? Sir, purchase consideration, sir, 28,25,000. So what is your presentation? Sir, equity shareholders 1,80,000 shares of 10 each at 12.5 to A Limited 12,50,000. 38,000 equity shares of 10 each at 12.5 to B Limited 4,75,000 and cash 5,75,000 and 16,000.
So your mode of discharge is actually this is not the correct format. We will pay in the amount payable to equity shareholders in the form of cash, 5,75,000, and in the form of equity shares, 1,80,000 shares into 12.5. 12.5. Correct? Eh? Yes, sir. So what is the value? 1,80,000 into every one of you. 1,80,000 into 12.5. So 22,50,000 plus 5 lakh five lakh 75, sir. seventy-five thousand. Okay. 28, 28 lakh 25. Now, for only for understanding purpose, 22,50,000 we will bifurcate it in two form. One is equity share capital and one is security premium. Correct? Yes, sir. 10 and 2.5. Sir, 18 lakh and sir 4 lakh 50,000. 4,50,000. Next. Next, 4 lakh 75,000. And same Sir, thing we are doing for 3, 38,000 into 12.5. sir, 3 lakh 80,000. Okay. Sir, 95,000. 95. Yes, you're correct. Security premium and equity share capital. Okay. So now I will prepare balance sheet. Balance sheet in the format. Have you done with this question? Yes, sir. Whether any asset is revalued? No, sir. सर And सर एक एक्स्ट्रा पॉइंट था सर इसमें कि ओनली द एसेट्स आर टेकन ओवर. yes, only assets are taken over and remaining you will pay by your own. So this Yes, is sir. very new thing. Okay. Only assets are taken over. So liabilities paid by the, ट्रांसफर और कंपनी. yes, liabilities are paid by the transfer company. थोड़ा अच्छे से रिवाइज करना. Okay. Because this question is very unique question. Only assets are taken over. Liabilities plus preference shareholder paid by ट्रांसफरर कंपनी ओनली. मुझे इसके नोट्स निकाल के देना बेटा हार्दिक बाद में. ओके सर. मैंने कल भी आपको कुछ भेजने को बोला था. देयर आर टू मिस्टेक्स इन स्टडी मैट. नो, यस सर. आपने टाइप करके नहीं भेजा वो. तो सर मैं भूलना, मैं सर अभी ब्रेक में भेज देता हूँ सर टाइप करके. वो दोनों भी मैंने आपको भेजने को बोला था. सो वी कैन रेक्टिफाई अवर स्टडी मैट. यस सर, मैं अभी भेज देता हूँ सर, ब्रेक में भेज दूंगा सर. कोई बात नहीं. देयर आर टू मिस्टेक्स. यस सर. ठीक है. चलो. And you also note down these important points of I want index Hardik for these questions. सर ये सारे क्वेश्चंस के लिए. जितना हो सकता है दीजिए. ओके सर. प्रीति, I want index. Okay. प्रीति नहीं आई है लगता है आज. आई है. ओके. तो उतना अपने ग्रुप पे भेज दीजिए बेटा प्रीति. ओके माय डियर. चलो. सो ओनली सनरी एसेट्स आर टेकन ओवर. हाँ. तो टेल मी. सर टोटल जो ग्रॉस एसेट्स हैं वो सो सर मैं. at book value only यस सर. except cash and कैश. bank, no? यस सर. So assets की total will be
28,10,000. For 2950 minus 140. 28,10,000. 28 lakh 10,000 plus don't take goodwill also. सर इसमें goodwill नहीं है सर. B में तो है ना. ये सर उसमें नहीं लिया सर. हाँ. 4,94,000. Yes. Okay. Yes sir. Then equity share capital 18 lakhs plus 3,80,000. 21,80,000. Say yes or no. Yes sir. Security premium 450 plus 95. 5,45,000. And bank balance, how much you have to pay? Sir 4,20,000. 575 plus 16,000. So bank balance is 5,91,000. Say yes or no. Yes sir. Negative. Negative sir. 33,16,000 you're paying for assets. And how much assets you are getting? 33 lakh 4,000. So you are paying extra. Sir 60 minus 50. Sir 12. 90,000. What? I got the goodwill 12,000, my dear. Yes sir. Sorry. 12,000. Yes. 12,000. No, but you are getting 90,000. It's correct. Equity share capital we are paying. सर आपने सर कल बोला था ना कि कभी हो नहीं सकता एसेट्स, तो मैंने सर दोनों चीजें ले ली, लाइबिलिटीज प्लस एसेट्स. कल किसी ने पूछा था ना सर, यही सेम क्वेश्चन का था शायद, तो सर मैं दोनों ही चीजें ले ली थी, लाइबिलिटीज और एसेट्स. तो मेरा नेट एसेट्स जो है वो सर डिफरेंट आया सर थोड़ा, तो चेंज होगा सर मेरा आंसर. 28 lakh 10,000 we calculated correctly. यस सर. ऑलरेडी गुडविल कितना है भाई? सर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 62 है, एंड सर जो अभी करंट आएगा वो सर 90 आएगा सर. अगर 62 तो गड़बड़ हुआ है. सर एक बार आप वो बना लो सर नेट एसेट्स वाला ना, तो 545 plus 591. इनका 495 for 62. 5,56,000 आया क्या? यस सर. माइन और सर जो 5,56,000 है, एंड सर जो हमने पे करा है वो सर 5,25,000 है, तो सर इसमें कैपिटल रिजर्व आएगा. Why I have not taken goodwill? सर सर वो तो मुझे पढ़ा ऐसा लगा मुझे. नो, आई मेड मिस्टेक. सो गुडविल के साथ लेना था. बोलो, गुडविल के साथ 5 लाख. 5,56,000 है सर. So what is the total asset? So including goodwill I have to take, huh? एंड सर जो हमने 33 पे lakh 66,000
and I'm paying memory plus, ये 3366, 2180 plus 545 plus I'm paying 591, 33 lakh 16,000. इसमें कोई मिस्टेक हुआ है क्या मेरा इन कैलकुलेशन? 18 380 plus 95, सर so 30, PC सर 28 lakh 10,000 plus 556. ये सर ये तो सही है सर, 3366 8 है 77। तो गड़बड़ हो रहा है किधर तो, कैलकुलेशन मिस्टेक। 90,000 क्यों नहीं आ रहा है? 2825 एंड यू आर पेइंग 28 lakh 10,000. You are taking 12 till okay, 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 okay. So this is no beta. We are correct. Here positive. सर We are एक paying. कैपिटल रिजर्व है और एक सर गुडविल है, एंड सर पेटेंट्स है और एक एग्जिस्टिंग गुडविल है। So there is a capital reserve of 50,000. यस सर, Capital एंड reserve of 50,000। C. I am buying assets यस सर, of 33 lakh 66,000. And how much I am paying? 30 2825 plus 491. So I'm paying 33 lakh 16,000. So my net, I'm paying less. And if I'm paying less, it is my capital reserve. Correct? यस सर। किधर तो मैंने पढ़ा है यार, गुडविल इज नॉट टेकन ओवर. नहीं सर, गुडविल नहीं सर, वो लाइबिलिटीज आर नॉट टेकन ओवर एंड प्रेफरेंस शेयर इज नॉट टेकन ओवर। All assets other than goodwill are taken over at book value. यस सर। ठीक है, देखते हैं. So 50,000 is goodwill, capital reserve, and 62,000 is my goodwill. Correct है? यस सर। ठीक है, let's check it. देखते हैं बाद में क्या करना है. So फिलहाल तो कैपिटल रिजर्व दिख रहा है. Now fourth adjustment is not important. फिफ्थ एडजस्टमेंट प्रेफरेंस होल्डर्स, ये कौन पे कर रहा है? सर लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड. यस सो सर। ए बी लिमिटेड में नो एंट्री. सर उनके उन्होंने लेकिन नए इशू करे हैं सर, हम्म. उन्होंने सर नए खुद के इशू करे हैं प्रेफरेंस शेयर्स। हाँ. And now they are issuing 60,000 at 10% premium. What is the preference shares value? सर 6 लाख आपका फेस वैल्यू है, एंड सर 60,000 सिक्योरिटी फी। One share of how much, beta? सर 10 रुपी। Okay, 10 each. यस So 60,000 into 11. यस सर, 6,60,000। So बैंक में कितना आएगा? 60,000 into 11. सर 6,60,000। 6,60,000. यस सर। बैंक में ऐड होगा. Security premium, sorry, I made a mistake. Security premium 60,000 एंड 60,000 and preference share capital 6 लाख। 6 lakhs. 60,000. Okay. And what about equity share capital? They issued to public सर 30,000 equity shares. So 30,000 into 10, 3 lakhs, and 2.5 into 30,000, सर 375, 300 फेस वैल्यू, 75,000. 75 सिक्योरिटी प्रीमियम एंड 300 कैश। 75,000. So 3 lakh 75,000 there. कैश। यस सर। We are increasing cash balance. So ये entry भी खत्म हो गया. Okay. यस सर। Cost of liquidation will be 10,000 and 15,000. सर वो हम बियर नहीं कर रहे सर। We are not bearing it. नहीं सर, सर वो मतलब Where it is given. सर लास्ट लाइन है।
Sir, it is estimated that the cost of liquidation, including liquidation remuneration, will be 10,000 in case of A Limited and 5,000 in case of B Limited. तो So सर where मैंने it is given that they will not bear that expenses. सर मैंने वो assumption लिया था कि लाइक क्योंकि सर कुछ मेंशन भी नहीं है सर लेने का. We'll do that assumption. सर क्योंकि सर लेने का भी तो नहीं है ना कि सर उन्होंने बेयर करा. And what about underwriting commission? सर वो लाइबिलिटी अदर करंट लाइबिलिटीज पर शो करा और Okay. रिजर्व से So माइनस we कर. will assume liquidation expenses is not paid by. Okay. So 50,000 minus 24,000. Capital reserve we are going to adjust, no, for preliminary expenses. यस And underwriting commission we will show as a reserves and surplus में से minus how much? सर 38,900. 38 900. 900. एंड सर So अदर करंट capital reserve लाइबिलिटी. is also they have deducted from this 24,000, and underwriting commission payable will be 24,000. सर 38,900. Sorry, kitna 38,900. I will tell you this balance sheet once again. Don't worry, beta, if you are not getting it. सर क्योंकि मेरा भी नहीं आया सर सही इसका. क्या क्या? मेरा भी सर सही नहीं आया. ठीक है. 62,000 is goodwill, and I am getting the amount of 50,000. So 62,000 you are going to write it off against this 50,000. So your goodwill will be net 12,000. 12,000. It's very simple, beta. I will tell you. Don't worry. And मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आया? I will check it out. जल्ले कैलसी पे सिक्योरिटी प्रीमियम यस सर. 450 यस सर. plus 95 यस सर. plus 60 plus 75. सर 680. 6 lakh? 80,000. Correct. Then take equity share capital. यस सर. 1800 plus 380 plus 300. 1800 380 plus 300. सर 2480. 24. 80. And preferential capital is 6 lakhs. Correct. यस सर. Then you do not have any liability. नो सर. Your asset side की total, yes, bank balance लीजिए यस सर. 660 660. plus 591 595. 590. सर minus 591. Sorry, it's my mistake. 660 minus 591 591 plus 375 is 375 minus preliminary expense. minus 24,000 minus 24. Sir 420. 4,20,000. And now you can do one thing. 33,66,000 में से you deduct 62,000. Minus 62. Sir 33 lakh 4,000. So 2810 plus 556 minus 62. 33 lakh 4,000, correct? Yes sir. Goodwill we take 12,000 and bank balance 420. Take a total 3304 plus 12 plus 420. Sir 37 lakh 36,000. 37 lakh. What is the equity share capital you are getting? You answered it. 2480 4 lakh 80,000 plus 600. plus 6 lakhs and plus what is the security premium you are getting? 680. 6 lakh 80,000 and reserves and surplus minus 62,900 minus. 60. Okay. So tell me the total 2480 plus 600 plus 680 minus 62.9 plus 30.9.
Sir, 31 lakh 73.8. 3173.8. 30,80,000. Share capital ले 31 lakh, 30,80,000. 24 plus 6, 30,80,000. Security premium and reserves and surplus. 680 minus 62.9. 680 minus 62.9. Yes, sir. 6 lakh 17,000. 100, no? 100, sorry, 100. 6 lakh 17,100. And other current liability you are showing 38,900. So Yes. 38.9. 2480 plus 600 plus Sir, answer, sir. 7.1 3736. and 38.9. 3736. I'm getting tallied figures. Yes. Yes, beta. Now I will explain you one more time. Don't get panic. Other students. Okay. See. Now in this question, what is important? Now let's understand it. Don't give up. I will explain you one by one. We will prepare balance sheet in T format. Anilji, 5 minutes, please. I will take your query at the end. Okay. देखिए, question is very simple. Now, see, we don't have to focus on A limited and B limited. 16 marks question. Actually, now students are getting confused because they don't understand कि in this question we are paying only for assets. We are only paying for assets. Remember. तो first, and if you have any difficulty, meanwhile you can ask me, हाँ बेटा. Yes. अभी देखिए. So चलो rough में we will do. Yes. If you have any query, you can ask me. अच्छा. What is the assets total? Vaidai, please raise your hand. सर मैं म्यूट कर दूं? Yes, आप म्यूट कर दो. थैंक यू सर. हाँ. Vaidai. Now let's focus. What is the assets total, beta? 29 lakh 50,000. 29 lakh 50,000. But you are not taking cash and bank. So except Yes, cash sir. and bank, can you tell me the total? 28 lakh 10,000. Okay. Any difficulty in understanding this? No, sir. No. 28 lakh 10,000. But sometimes I also have to refer answer when I'm doing it for the first time. See, this question I solved it, but in 2017-18 might be I solved it, and after that I never took this question in class. Now you are very lucky batch because you are getting extra time. So we are solving some past questions also. Okay. So by the Yes, sir. goodwill first we will take it. Okay, but we will write it separately. Okay, so Okay. goodwill I will write it 62,000 in inner side. Where I will write this in the inner Inner side. side. Okay. Ha. Yes. And now other than goodwill and cash and bank, can you tell me the total? 4 lakh 94,000. 576 minus 62 minus 20. 4 lakh? 94,000. Yes. Now PC we calculated, correct? Yes, sir. 28 lakh 25,000. And cash balance. Now see, equity share capital is 18 lakhs. Say yes or no? Yes, sir. 18 lakhs is equity share capital. Sorry. So I will write in equity share capital 18 lakhs. 18 lakhs. Extra 4 lakh security 50,000. 50,000. I will write it in security Premium. premium. 3 lakh 80,000 in equity share capital. Then I will write
3,80,000 in equity share capital and 95,000 in security premium. And 95 na beta? 95,000. Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. And from cash, I 5 am lakh reducing. 74,000 From and cash, I am 16,000 reducing 575 and and 4 16,000. and 16,000. Can I take total of this? Yes, sir. 5 lakh 91,000. 575 plus 16. 5 lakh 5 lakh 91. 91,000 I'm paying in cash. See now what is the assets total beta? 2810 plus 494 plus 62. So my assets taken over 33 lakh 60,000. Yes, sir. And what is the PC that I paid? 28 lakh 25,000. 28 lakh 25,000 plus 4 lakh 91,000. So how much PC I am paying? 33 lakh 16,000. Say yes or no. Yes, sir. गुडविल लिया क्या बेटा मैंने? Yes, sir. 44,000. Mine 33 lakh 66,000 है बेटा ये. 66,000. 50,000. So capital reserve is 50,000. I'm paying 50,000. less, no? Yes, sir. So my capital reserve inner side I will write 50,000. 50,000. Any difficulty? Sir, the purchase consideration. Can you tell me one more time? PC. Yes. 28 lakh 25,000 is the total PC. That is for A limited and for B limited 491. Yes, sir. Yes, yes. 2825 plus 491. So Okay, sir. total PC you are paying Yes, sir. 33 lakh 33 lakh 66,000. 16,000. Got this? Yes, sir. Yes, sir. Anyone has difficulty beta in understanding this? Anil ji? Anil, any difficulty? Sir, while calculating purchase consideration, in the question it is clearly mentioned that while sketching initial balance sheet, we need to ignore goodwill. Goodwill, And but yes. While while calculating calculating balance purchase sheet, Hello, sir, can I explain? yes. Sir, while sketching initial balance sheet of new company, we have to ignore goodwill. And while calculating purchase consideration, we have to consider goodwill because in the question it is clearly mentioned that we need to ignore in the new company. Uh, Old company will only close after paying the purchase consideration, right? Hello, Hmm. am I correct, sir? You are talking about you are taking first goodwill. So what do you want to say? Ki first we will take goodwill and then while Yes. writing it off, we will not record its book value, but we will consider goodwill and capital reserve net figure. Okay. Okay, Anil, what they Yes. want to tell you that they will first accept cash and bank balance, they will record it. They Yes, sir. will take over goodwill. But while recording goodwill, they can see the difference also. Okay, they want to tell you ki goodwill and capital reserve you can take set off. You don't record goodwill's book value in your balance sheet. Okay. So they just want to tell you that you have to take net of figure. Okay, sir. So that is also they mentioned it. They have not taken over goodwill. Sorry, they have not taken over only cash and bank balance. So new company has taken over goodwill also. Okay, sir. Okay. Okay. So assets taken over including goodwill you will consider, but goodwill we record it separately Okay, sir. of net figure.
Okay, sir. Assets taken over, beta, not turnover. Sakshi, assets taken over is how we are going to calculate assets taken over, beta. 29 lakh 50,000 minus 1 lakh 40,000 and 5 lakh 76,000 minus 20,000. So take on calci 2950 minus 140 plus 576 minus 20. So 33 lakh 66,000. Except cash and bank balance. And what we have done, whatever purchase consideration we have written, we have broken that purchase consideration. Okay, so our PC, it is 33 lakh 16,000, but some part is capital, some part is security premium, and some part is cash. Okay, so I have written it in very proper way, 33 lakh 16,000, and capital reserve balancing figure is 50,000. So my balance sheet is getting tallied till now. Okay, till now there is nothing difficult. Everything is tallying. Correct, Vaidavi? Yes, sir. Huh. Now, second point over, third point over. Are you concerned for any liabilities? No, sir. When liabilities are important for us? When we take over. No. When we are preparing Mm. A's account or A's books and B's books. Okay, we are not preparing A and B's books, so balance sheet is not important for us. Liabilities are not important for us. Otherwise, we will pay the liability in the from the cash balance of A and B. Got Yes. this? Yes, sir. We are not concerned for their cash and bank balance. We are not concerned for their liabilities also. Liability Because we are balance. not taking it over. Yes, sir. Okay. The liquidator of A Limited is to pay preference shareholder of 12 in cash for every share. Whether we are concerned for this? No, sir. No, because it's a liquidator of A Limited. Okay. A Limited is to make the public issue of 60,000 shares at rupees 10% premium, means 10 rupees share at 11. Okay. Yes, sir. So how much bank balance is increased? 6,60,000. And new account is preference share capital? 6 lakh. 6 Securities lakh. premium 60,000. And security premium is 60,000. 60,000. Any difficulty? No, sir. No. 30,000, Equity 12.5 means cash balance is increased by 3,75,000. 3,75,000. Equity 30,000 shares capital. into 12.5, correct? Yes, yes, sir. But out of this, Capital 3 lakhs and premium 75,000. and premium 75,000. 75,000 we will add. So 3,75,000 bank balance will increase. Yes, sir. Share capital 3 lakhs and 75,000 Premium. security premium. Got this? Yes, sir. So till now, no difficulty. Yes, sir. Next. Liquidation expenses 10,000 and 5,000 in case of B Limited. But we are not concerned for that. Okay, because it is incurred by A Limited and B Limited, we assume that. Okay. Yes, sir. And what is my preliminary expenses? 24,000. 24,000. And I will deduct it from my general P&L account. So I will write this as a P&L balance. 24,000 negative and cash balance also negative. So reserves come hua, cash balance come hua. So your account is yet tallied. And underwriting commission is 38,900, but you haven't paid it. So it's my loss, 38,900. But I have to Create a liability. create a liability, underwriting commission payable. So yet not paid means I have to create a liability, 38,900. Yes, sir. Problem over. Now, what is my equity share capital? Take a total. 1,800 plus 24 lakh 380, 80,000. 300.
24 lakh 80,000. 80,000. By red pen, I am writing all these Yes, sir. Securities final premium figures. 6,80,000. Security premium 6 lakh 80,000. 80,000. Capital reserve, I will set off with goodwill. So goodwill and capital reserve will get net So off. So 12,000 68 and goodwill. 15, 62 and 15. 12,000 goodwill. Yes, 12,000 goodwill. Goodwill. Okay. Yes, sir. P and L, I am getting negative figure. Yes, sir. 62,900 negative. And underwriting commission final figure Yes, sir. 38,900. Assets 33 lakh 4,000 4,20,000. minus 24 minus 591. So this is 4,20,000. 20,000. And my balance sheet total is 428 plus 12 plus 3304. 37 lakh 36,000. 36,000. And here equity share capital 2480 plus 680 minus preference share capital का 6 lakhs. Sorry. Preference share capital 6 lakhs minus 62.9 plus 38 point. Yes, sir. Tally. Tallied? Yes, sir. Yes. 37 lakh 36,000. 36,000. Everyone understood? Underwriting commission is not paid. Therefore, we will show it as one effect deduct from P&L and one effect underwriting commission payable. See, if you go by line, you will never make mistake. Yes, Tambeshwari ji, your questions now. बोलिए तांबेश्वरी. सर ये कैश कैलकुलेशन कैसे किया सर? ये -5,91,000. क्रेडिट साइड पे लिख के. अच्छा, वो कहां से आया? हाँ सर वही. और कहां से आया? क्या कैश पेमेंट 575 प्लस 16. ओके सर, वो सब टीसी से ही लिया है. हाँ, पीसी से लिया ना. सब पीसी है ना. एसेट्स के बदले में हम लोग पीसी तो Yes. रिकॉर्ड करते हैं. Yes, yes. एसेट्स sir. के बदले में आप क्या क्या लिखोगे? इक्विटी शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कैपिटल रिजर्व. आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मुझे भी थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर करना पड़ता है. Yes, sir. यस. Sir. यस बेटा वही दे. Sir, on the other hand, we can also assume that liquidator remuneration is paid by transferee company. And then you Right, will sir? deduct 24,000 from P&L, whatever the Yes, amount, sir. and cash balance you will reduce it. Okay? Yes, sir. Then P&L can be shown on the asset side also, sir. No. P&L has to be shown under resource and surplus as a negative figure Negative. under Okay, new sir. Schedule 3 format. You cannot show on the asset side. I think Okay. in BCom you may show it in the asset side, but that is very wrong. Okay. Okay, sir. आपको BCom में might be your faculty, Yes, sir. he might be suggesting you कि record P&L on the asset side, but it is not correct. Yes, Hardik. Okay, sir. सर लाइक सर ये जो एसेट्स नॉट मतलब लाइबिलिटीज नॉट टेकन ओवर है इसकी लाइन सर स्पेसिफिकली हमेशा क्वेश्चन में लिखा होगा ना तभी. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये. Such a question is not there in study mat. Not in study mat you can write over there कि ऐसा क्वेश्चन था. Only assets are taken over and you have to be very careful while reading one line ना बेटा. See, if I was there in the exam तो मैंने भी मिस्टेक किया होता कि कभी लाइबिलिटीज भी टेक ओवर कर ली रहती. बट यू हैव टू बी वेरी क्या बोल सकते हैं कि आपको वहां पे बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा while writing while reading the question also. सर मैंने भी क्योंकि लाइबिलिटीज टेक ओवर करा लेकिन Same आंसर निकल तो सेम ही आया मतलब वो. आंसर बैलेंस शीट इज गेटिंग टैलीड बट liabilities are taken over. ये specifically दिया हुआ है not taken over, so we are not concerned for that.
ठीक है एंड सर। सपोज इफ दे आस्क यू टू प्रिपेयर एज बुक्स, यस सर। ए के बुक्स पूछे होते तो आप लोगों ने क्या किया रहता, यू विल पे इट फ्रॉम योर ओन कैश बैलेंस, ओके, डोंट ट्रांसफर इट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यस सर। यस प्रीति, थैंक यू। थैंक यू सर। बोले। यस प्रीति, गुड मॉर्निंग सर। गुड सर मॉर्निंग। मुझे ना ये 6 पॉइंट वाला समझ में नहीं आया। ए बी लिमिटेड इज टू मेक अ पब्लिक इश्यू ऑफ 60,000, उसमें हमने 1 रुपी कैसे प्रीमियम लिया? ऊपर ऑथोराइज कैपिटल में देखो, प्रेफरेंशियल कैपिटल 10 रुपीज था। यस सर। There it is mentioned. If face value is 10, तो 10। 10% is a premium. ओके ओके सर। सर और एक डाउट था सर, अब जैसे कि ये क्वेश्चन में लिखा है कि एसेट्स ओनली एसेट्स आर टेकन ओवर, तो लाइक दूसरा कौन सा सिचुएशन हो सकता है जो लिखा है बट लाइबिलिटीज भी लेना है? If ऐसा business is taken over, तो वो स्पेसिफिकली देगा हमें? दिया अगर जाए। नहीं दिया तो ओनली एसेट्स ही लेना है चाहे कुछ भी हो जाए? Yes. Yes. If it is mentioned only assets are taken over, then assets has to be taken over. ओके सर, Okay. थैंक यू सर। Yes, Rashmi ji, thank you. रश्मि जी मॉर्निंग सर। बोले। सर ये कैश बैलेंस 5,91,000 माइनस क्यों किए हैं? कौन सा? जो कैश बैंक बैलेंस है उसको माइनस क्यों किए? फाइव यही लाख सेम क्वेश्चन मैंने अब भी इनको बताया, तांबेश्वरी को, कि कैश पेमेंट 575 आपने किया है to A company and B company, 575 for A and 16 for B. So your cash balance is decreasing, no? यस सर। तो 575 प्लस 16 कितना हुआ? 5,91,000। तो दैट इज आर डिडक्टेड फ्रॉम द कैश बैलेंस। ओके सर, नहीं राइट करके फिर माइनस किए हैं तो समझ में नहीं आया था मुझे। वो माइनस ही है ना, पेमेंट किया आपने तो माइनस ही होगा। ओके सर। सर एक और डाउट पूछ लूं? पूछिए। सर इस क्वेश्चन में नहीं, मैं उस दिन तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका एडिशन का, उसमें जो प्रेफरेंस शेयर है एडिशनल क्वेश्चन में, उसे बैलेंस शीट जब बनाते समय प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। 2 नंबर वाला सर एडिशनल क्वेश्चन। किधर है? प्रेफरेंस है ही नहीं इसमें। सर वो जो डिवेंचर को हम प्रेफरेंस शेयर से वो नहीं कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर डिवेंचर होल्डर को जब दे रहे हैं हम। सर क्वेश्चन पे आइए ना। हम्म। सर यहीं पे किधर दे रहे प्रेफरेंस? ये सर 4 नंबर जो है ना, द डिवेंचर ऑफ पी लिमिटेड आर टू बी डिस्चार्ज बाई। प्रेफरेंस कहाँ दे रहे? सॉरी सर, तो मैं पढ़ी तो थी। होता है, कोई बात नहीं। सॉरी सर, सॉरी सर। ठीक है। मैंने थैंक यू सर। ओके, होता है, डोंट वरी। ओके, नेक्स्ट तनु जी। आप लोग थोड़ा सा बी केयरफुल, यू आर रीडिंग द क्वेश्चन। डिबेंचर्स आर इशूड विद डिबेंचर्स एंड यू आर टॉकिंग की प्रेफरेंस क्यों नहीं दे रहे, अभी क्या बोलूं मैं इसमें। ठीक है, होता है तनु सर जी। हाँ, सर मुझे बस मतलब यही डाउट था कि मतलब कल हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो उसमें आप उसमें भी क्वेश्चंस में था कि एसेट से टेक ओवर कर रहा है, तो आपने बोला था कि उसमें हम लोग लाइबिलिटीज को भी लेंगे, तो मैंने लाइबिलिटीज को भी लेके सॉल्व किया था यही क्वेश्चन, तो बैलेंस शीट तो नॉर्मली टैली हो गया। बिजनेस टेक टैली होगा ही। बिजनेस इज टेकन ओवर एंड एसेट्स आर टेकन ओवर, डिफरेंस है ना। दे आर क्लियरली मेंशनिंग इन द क्वेश्चन, होल ऑफ ओनली एसेट्स आर टेकन ओवर। ओके सर। ठीक है, टैली तो होगा ही ना भाई। आप लोगों का सिर्फ लाइबिलिटी और ये करके आपने यू पेड एक्स्ट्रा, तो गुडविल बढ़ जाएगा आपका। सर मतलब अगर क्वेश्चंस में गिवन टैली है तो कि होगा, इफ इट इज एसेट्स आर बिजनेस टेकन टेक ओवर तो ओवर कर रहा है, yes, हाँ, यस, तो सर अगर बिजनेस नहीं। बिजनेस बिजनेस टेक ओवर कर रहा है तो फिर मतलब हम लोग एसेट्स एंड लायबिलिटीज बोथ कंसिडर करेंगे, बट अगर एसेट्स टेक क्लियरली ओवर कर रहा है मेंशन तो दिया बस। है एसेट्स आर टेकन ओवर, तो एसेट्स ही लेंगे।
ओके सर, थैंक यू सर। यस, नितिन। हाँ बेटा, बोलिए। जो डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर के बदले वो थर्ड क्वेश्चन में है। थर्ड क्वेश्चन में, हाँ। वो रश्मि पूछ रही थी सर, उसको पॉइंट हाँ, नहीं मिल रहा था। आपको समझ गया ना? हाँ मुझे तो समझ गया सर, क्लियर है सब। अच्छा रश्मि जी, 12% डिबेंचर्स ये क्वेश्चन में है, 3 नंबर के क्वेश्चन में है। यस यही सर, पूछ यस रहा। सर, यस सर। मैं अभी वो उसी को ढूंढ रही थी कि मैं कहीं तो वो नहीं बना पा रही थी बैलेंस से इसमें। अभी बना पाओगे? सर नहीं। पर आएगा ना, ये क्वेश्चन में तो आ जाएगा बेटा। यू कैन चेक शेयर कैपिटल में 2750 शेयर्स. What यस is the सर, amount of debentures? 2,50,000 है सर। 50,000, and you are paying 10% extra. यस, प्रीमियम। हाँ, so premium pay, so preferential capital will be 2,50,000 plus 25,000। 10%. So 2,75,000 preferential capital. Now, here it might happen that you will think 2,50,000 will be in preferential capital and security premium is 25. यस सर। तो ये भी है। वो तो अभी कैसा है कि नॉर्मली इट इज बेस्ड ऑन द इंटरप्रिटेशन, सो इज बेटर टू गिव अल्टरनेटिवली preferential capital 2,50,000 and security premium 25,000. So you will be in the safe hands. सर हाँ, ऐसे ही प्रेजेंट कर रहे थे, पर हमारा जो ये 38 लाख, 38 लाख, ये 38 लाख कैसे हो रहा है? सर पीसी में कुछ इशू है क्या? उसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा क्या? मेरा ज्यादा ही हो जा रहा है। ये देखो, ये पीसी है आपका 23,31,000. हाँ, पीसी तो इतना ही आ रहा है, लेकिन जब हम उसे 1 मिनट सर, यहीं पे 30 एक मिनट सर, दोनों का पीसी हम ले तो इसका से कैपिटल होगा ना, हमारा शेयर कैपिटल 23,31,000 प्लस 12,50,000, ये हमारा शेयर कैपिटल हो गया ना सर? हाँ, तो हाँ है ना तो वो शेयर कैपिटल। इसमें मैं ऐड की फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2,50,000। तो सिक्योरिटी प्रीमियम 25,000 आपको अलग से बताना पड़ेगा। हाँ तो अलग से ही बता रहे हैं सर, तो थर्टी एट कितना है? लाख थर्टी तो कितना होगा फिर आपका आपका और उससे मेरा आंसर रुपये थोड़ा 38 लाख 58 प्लस तो आपका 93 38,06,000 आएगा। 15,500। बैलेंस शीट हमारा 39,61,500 हो जा रहा है सर। चेक कर लीजिए सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आ रहा है आपका। 25,000। हाँ, तो 38,25,000 आया, ये 38,06,000 आएगा शेयर कैपिटल। नहीं 30, ये आया है 20, शेयर 31, कैपिटल तो बोलिए आपका कितना आया है। 35,81,000। 35 81,000। कहाँ से आया ये? सर ये दोनों पीसी को हम प्लस कर ऐड किए ना, तो ऐड किए तो कितना हुआ, 2331 प्लस 1225, यही तो 35,56,000 है। 31,000 प्लस 12,50,000, 38,81 ही तो आ रहा है। अरे आप ये दोनों को ऐड तो कीजिए, आप जो पीसी को तो ऐड कीजिए, कितना आ रहा है पीसी। अच्छा सर, हमारा पीसी 12,50,000 आया है, सॉरी सर। तो गलत हुआ है ना वो, 12,25,000 आना चाहिए था। ओ सॉरी सर, तभी यहीं पे मैं पीसी पता नहीं कर मुझे। हाँ, तो पीसी में ओके सर, मिस्टेक। अब मैच हो जाएगा। हाँ, आपका पीसी गलत आए तो हम क्या कर सकते हैं उसमें, आपका वही गलत है। ओके, चलिए ठीक है, विल टेक अ ब्रेक 8:15. सो इन ब्रेक यू कैन सॉल्व नाउ क्वेश्चन। कौन सा डिफिकल्ट है बेटा? सो विल डू वन थिंग, यू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7, जितने हो सकते हैं उतने हम लोग करते हैं। 7 you solve in the break. Almost same questions are there now. Now I don't think कि difficulties होंगे. Yes,
हार्दिक, एनी डिफिकल्ट क्वेश्चन बेटा? स्पेसिफिकली यू वांट दिस क्वेश्चन? सर ये जो अभी कराया था यही सर एक डिफिकल्ट लगा था, बाकी तो आसान थे। बाकी इजी थे? चलो यस सर। बहुत बढ़िया। ठीक सर है एक साक्षी। हाँ एक बेटा। इसी चीज थी सर, इसमें ना एक मिस्टेक है सर एक क्वेश्चन में। इधर ना एक बैलेंस शीट है, उधर ग्लोरी एंड ग्लोरियस लिमिटेड है, और सोल्यूशन वो जो बाकी का आंसर है उधर ब्लैक एंड व्हाइट लिखा है सर, तो पता नहीं लग रहा। अच्छा ठीक है, देख लेता हूँ मैं। सर ये वाला क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में चेंजेस करने पड़ेंगे, फिर चेक करो कहाँ पे गलती है, वो डाउनलोड कर लो वो क्वेश्चन। ब्लैक लिखा है। सॉरी सर, क्वेश्चन 12 है, ब्लैक लिमिटेड वो ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट ये वाला। सर ये ग्लोरी एंड ग्लोरियस की बैंड, गैलेक्सी एंड ग्लोरी के, और इधर ब्लैक एंड व्हाइट लिखा है वो सर ब्लैक क्वेश्चन। एंड व्हाइट वो कॉपी पेस्ट में हो गया है वो। सर तो कौन सा बैलेंस शीट है ब्लैक पहला ब्लैक होगा। का, एंड सर सेकंड व्हाइट का? ये 12 नंबर के क्वेश्चन में चेंजेस करवाओ ना, गैलेक्सी एंड ग्लोरी लिखा है, एंड ब्लैक लिमिटेड और व्हाइट लिमिटेड का क्वेश्चन है। तुरंत करवाओ ताकि वो ये हो जाए। ठीक है, बाकी विल डू इन द ब्रेक। साक्षी, डू यू हैव एनी क्वेरी? थैंक यू सर। सर मला एवढं विचारायचं होतं, मराठीमध्ये बोललं चालेल चालेल का सर? क्या? मराठीमध्ये बोलले तर चालेल का? नको, हिंदीत बोला। मुझे ये प्रॉब्लम थी सर कि क्वेश्चन इजी होता है पर कभी कभी हम बैलेंस शीट जब सॉल्व करते हैं तब टैली मुझे टैली नहीं होता, जब आंसर रिफर करना पड़ता है फिर तब सबको वो। होता है वो, मुझे भी करना पड़ेगा। समटाइम्स माई थॉट्स आर डिफरेंट फ्रॉम आईसीआई थॉट्स। तो वो उसमें आपको प्रैक्टिस से ही थोड़ा बहुत हो जाएगा। कभी कभी मुझे और पेशेंस से सॉल्व करना, जैसे मैंने अब भी सॉल्व किया ना ये क्वेश्चन। हम्म, तो वो टेंशन मत लीजिए साक्षी, आप यू आर डूइंग इट फॉर वन टाइम, तो एटलीस्ट 50% विल गेट टैली। सेकंड टाइम किया तो 70% तक जाएगा, फिर परफेक्शन आने के लिए 4 टाइम सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है। एंड ऑल वो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो आपने नोट डाउन किए ना, बस उसी को फोकस कीजिए। ठीक है? ओके सर। तो ये डोंट गेट कि आप क्यों इतना टेंशन लेते हो। नहीं टैली हुआ तो भी मुझे स्टेप मार्क्स है कि नहीं साक्षी एग्जाम में? हाँ सर। तो क्यों टेंशन लेना है? हुआ टैली ठीक है, नहीं हुआ टैली, पर मैंने स्टेप मार्क्स के मार्क्स तो मिलने ही वाले हैं। तो आप ये क्यों सोचते हो? आई एम टेलिंग यू वन फैक्ट साक्षी, मैंने जब सीए किया था इंटर, हमें 22 चैप्टर्स थे, 22 चैप्टर्स इंटर में। 22 चैप्टर में से बेटा मेरे 12 चैप्टर्स तो भी ऑप्शन में रहेंगे, पर 10 चैप्टर्स मेरे जो थे वो मैंने किए थे। 12 चैप्टर का समथिंग आई नो जो क्लास में होता था, बट माय बेसिक्स वेर क्लियर, तो मैं उतना पोस्टिंग तो करके आता था। और हमारे टीचर ने हमें यही बोला था कि 2 प्रॉब्लम्स टैली करो फुल पेपर में से, स्टिल यू विल गेट द एग्जाम्पशन, सिंपल रूल। और टैली नहीं होता, आप लोगों का क्या प्रॉब्लम है पता है? आप लोग है ना, जो नहीं आ रहा है ना उसके बारे में ज्यादा कंसर्न हो, और जो आता है उसके बारे में नहीं। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, माय बैलेंस शीट वोंट गेट टैली, पर स्टेप मार्क्स नहीं है अपने को। हाँ सर। सो एटलीस्ट पोस्टिंग तो करके आओ। हाँ। ठीक है? ओके। चलिए, सो थैंक यू सर। वी विल मीट एट 8:45। तब तक यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए, थैंक यू।
Uh, so he's no more. So I'm going to leave you today. We will continue tomorrow with a new chapter. If you have any difficulty in these questions, question 5 to or 6 to, I think 7 to 11, you can ask me. You solve these questions, I will give you screenshot tomorrow. Tomorrow we'll start with a fresh chapter, that is the internal reconstruction, and amalgamation almost we have completed. So if you have any query related to amalgamation, you can ask me. Okay. So we'll continue tomorrow. Yes, thank you, beta. Okay.